नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आज आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट कमिटी एंड कमिशन टॉप 50 वन लिनियर क्वेश्चन डिस्कशन करवा। यही क्लास टी आगामी OPSC ASO एवं OSSC CGL मेंस पई अति गुरुत्वपूर्ण एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई मध्य इम्पोर्टेंट। चलंतु डिस्कशन स्टार्ट करवा। First question: Which committee recommended the establishment of the Panchayati Raj system in India? प्रथम क्वेश्चन होची पंचायती राज सिस्टम भारत रे केउ कमिटी रेकमेंडेड करथिला। आंसर होची बलवंत राय मेहता कमिटी जहाँकि 1957 मसीह रे रेकमेंडेड देइतिला। पंचायत राज समिति ये होची 3 टायर सिस्टम: ग्राम पंचायत इन विलेज, पंचायत समिति इन ब्लॉक एंड जिला परिषद इन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, व्हिच कमिटी फर्स्ट रेकमेंडेड ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? आर आंसर होची LM सिंघवी कमिटी जहाँकि 1986 मसीह रे देइतिला। यह राजीव गांधी गवर्नमेंट समय रे अपॉइंटमेंट होइतिला। नेक्स्ट, व्हिच कमिटी रेकमेंडेड the inclusion of fundamental duties in the constitution of India? यह सोरन सिंह कमिटी रेकमेंडेशन अनुसार होइतिला एवं यह आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अनुसार ऐड होइतिला जहार पार्ट होची IVA एवं आर्टिकल होची 51A। Which commission was set up to investigate the excesses committed during the emergency in 1975 to 77? यार आंसर होची साहा कमिशन। नेक्स्ट, व्हिच कमिशन वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया इन 1983? यार आंसर होची सरकारिया कमिशन। ठीक से भली सेंटर स्टेट रिलेशन पई आ गोटे कमिशन रही पंची कमिशन। नेक्स्ट, which commission was formed in 2007 as the second major commission on center state relation? मोया यार पूर्व जणाइली कि पंची कमिशन, यार आंसर होची सही पंची कमिशन। नेक्स्ट, which commission recommended 27% reservation for other backward classes in government jobs? यह मंडल कमिशन रो रेकमेंडेशन रे दिया जाइतिला जहाँकि 1979 मसीह रे एस्टाब्लिश होइतिला। Which committee led to the setting up of the Central Vigilance Commission? जहाँकि होची CVC। आर आंसर होची के संथानम कमिटी इन 1962। नेक्स्ट, which committee recommended a 2-tier पंचायती राज सिस्टम instead of 3 tiers? यह आंसर होची अशोक मेहता कमिटी जहाँकि 1977 मसीह रेकमेंडेड करितिला। ए 2-टायर मॉडल रही कि जिला परिषद इन डिस्ट्रिक्ट एंड मंडल पंचायत इन ग्रुप ऑफ विलेज। नेक्स्ट, व्हिच कमिटी ड्राफ्टेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2020? यह ड्राफ्ट करथिला डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमिटी। एई NEP रो स्ट्रक्चरटा होची 5+3+3+4 जहाँकि पूर्वर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 को ड्राफ्ट करिथिला। नेक्स्ट, व्हिच कमिशन रेकमेंडेड द लैंडमार्क नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968? यार आंसर होची कोठारी कमिशन। इट रेकमेंडेड करथिला कि 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, व्हिच कमिटी रेकमेंडेड comprehensive banking sector reforms in 1991 and 1998? यार आंसर होची नरसिंहन कमिटी। नेक्स्ट, which committee recommended the structural framework for monetary policy and inflation targeting in India? यार आंसर होची उर्जित पटेल कमिटी इन 2014। नेक्स्ट, which committee was formed to suggest reforms for the insurance sector leading to IRDAI? आर आंसर होची मालहोत्रा कमिटी जहाँकि 1994 रे फॉर्म होइतिला।
Next, which committee recommended a new methodology for poverty estimation based on a nutritional and multi-dimensional basket? Our answer is Suresh Tendulkar committee. Next, which committee succeeded Tendulkar and revised the poverty line estimation upward using a modified basket? Our answer is C. Rangarajan committee, jaki 2014 मसीह recommended करथिला. Next, which committee recommended extensive reforms for the restructuring of the Indian Railways? Answer, Vivek Debray committee in 2015. Next, which committee suggested major reforms in the governance and administrative structure of the BCCI? यार आंसर है लोधा कमिटी जहाँकि 2015 मसीह सजेस्ट करिथिला. नेक्स्ट, which committee recommended the legal framework for personal data protection in India? Answer, Justice BN Sri Krishna committee जहाँकि 2018 मसीह recommended करथिला. Next, which committee proposed a comprehensive framework for public-private partnerships in India? Our answer is Vijay Kelkar committee in 2015. Next, which committee recommended landmark direct tax reforms and tax structure rationalization in the early 1990s? Our answer is Raja Chalia committee in 1991. Which committee recommended structural changes for the development of small scale industries? ଏହା ଆବିଦ ହୁସେନ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି 1997 ମସିହାରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା. ନେକ୍ସଟ, which body formulated the landmark report on environmental conservation in the Western Ghats in 2011? Answer, Madhav Gadgil panel in Western Ghats ecology expert panel. Next, which committee balanced conservation and development in the Western Ghats by modifying the Gadgil report? Our answer is K. Kasturiranjan committee on Western Ghats. यह 2013 मसीह recommend करथिला जहाँकि reduce to करथिला designated ecologically sensitive area to approximately 37% of the Western Ghats. Next, which committee recommended stringent amendments to criminal law following the 2012 Delhi gang rape? Our answer is Justice J.S. Verma committee in 2013. Next, which commission was appointed in 1966 as India's first administrative reforms commission? Our answer is Morariji Desai. Next, who headed the second administrative reforms commission in 2005? Our answer, Berappa Moili. Next, which committee recommended the reduction of the voting age from 21 to 18 years? पूर्वर आमर voting age रही 21 वर्ष किंतु तरकुंडे कमिटी रो रेकमेंडेशन अनुसार यह 18 वर्ष को रिड्यूस करा जाइतिला एवं यह 61st Constitutional Amendment Act 1988 रे implement करा जाइतिला. Which committee recommended state funding of elections in India to curb black money? Our answer is Indrajit Gupta committee in 1998. Next, which committee investigated the dangerous nexus between politicians, bureaucrats and criminals in India? Our answer is Bora committee in 1993. It warned about parallel networks of mafia rule and criminal syndicate operating with political patronage. Next, which committee was formed to look into the restructuring of the Food Corporation of India? आमर जो Food Corporation of India रही तार restructuring शांता कुमार कमिटी रो रेकमेंडेशन अनुसार होइतिला जाकी 2015 मसीह घटितिला. Next, which committee reviewed the economic capital framework of the Reserve Bank of India in 2019? Our answer is Bimal Jalan committee. Next, which committee recommended reforms for the microfinance sector to protect low income borrowers?
Answer YH Malagam Committee in 2011. Established parameters for microfinance institution regarding lending caps, margin ceiling and interest rate regulations under the RBI. Next, which committee recommended the introduction of a specialized payments banks and small finance banks? Our answer is Nachiket More Committee in 2014. Next, which committee recommended the enactment of a dedicated competition law to replace the archaic MRTP Act? Our answer is SBS Raghavan Committee in 2000. Next, which committee recommended the legal framework for the corporate insolvency resolution process? Our answer TK Viswanathan Committee, जहाँकि बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमिटी सदस्य थिले. नेक्स्ट, व्हिच कमिटी रेकमेंडेड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड चेकिंग मसल पावर? यह दिनेश गोस्वामी कमिटी रेकमेंडेशन अनुसार 1990 रे दिया जाइतिला, जहाँकि प्रपोज करथिला कि एक्सटेंसिव मेजर्स फॉर स्टेट फंडिंग एवं एंटी डिफेक्शन लॉ अपडेट्स. नेक्स्ट, which committee recommended the implementation of value added tax in India? Value added tax means VAT, जहाँकि LK जहाँ कमिटी recommendation अनुसार होइतिला. This was first proposed a modified value added tax system by mod VAT in 1976, which served as an early conceptual precursor to the modern GST. पूर्व जो VAT थिला एबे चेंज है कि जीएसटी होइछि. जीएसटी अर्थ ग्रोस एंड सर्विसेज टैक्स. नेक्स्ट, व्हिच कमिटी recommended the creation of an independent fiscal watchdog called the Fiscal Council under the FRBM Act? Our answer is NK Singh Committee in 2017. Which committee recommended legal and institutional framework for the creation of the National Investigation Agency, that is NIA? Our answer Administrative Reforms Commission 2, जहाँकि 8th report देथिला. Next, which committee recommended the introduction of indirect tax reforms that laid the early foundation for service tax? The answer is Rekhi Committee in 1992. They have focused on the simplification and integration of indirect taxes, facilitating smoother movement toward common market principles. Next, which committee recommended the establishment of the NABARD, अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? यह बी शिवरमण कमिटी अनुसार रेकमेंड दिया जाइतिला, जहाँकि 1982 मसीह नाबार्ड फॉर्मेशन घटितिला. नेक्स्ट, व्हिच कमिटी रेकमेंडेड द मर्जर ऑफ RRBs, that is regional rural banks, with sponsor banks to improve financial viability? Our answer is Khusro Committee in 1989. Next, which committee recommended steps to reform and modernize the direct taxation framework through a direct taxes code? Our answer is Arvind Modi Committee in 2017. Next, which committee investigated the security lapses during the 1919 Kargil conflict? Our answer is Kargil Review Committee, जहाँ को हेड करथिले के सुब्रमण्यम. यह रिकमेंडेड कौन रिकमेंड देथिला? यह रिकमेंड देथिला कि स्वीपिंग ओवरहॉल्स इन इंडियाज इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट. नेक्स्ट, व्हिच कमिशन recommended the establishment of a permanent interstate council, जहाँ की हमारा आर्टिकल 263 रे मेंशन रही. आर आंसर होची सरकारिया कमिशन. नेक्स्ट, व्हिच कमिटी recommended structural changes in the Indian civil services exam including the introduction of the CSAT paper? Our answer is YK Alagh Committee in 2001. Next, which committee recommended the operational guidelines for the implementation of the National Rural Employment Guarantee Scheme, that is MGNREGA scheme? Our answer is Jean Drudge and Mihir Saha Advisory Panels. Next, which committee focused
on reforms in urban infrastructure, financing and suggested municipal bonds? Our answer is Isher Judge Alulia Committee in 2011. Ajir amara sesho question. Which committee suggested the legal frameworks to regulate crypto assets and digital currencies in India? Our answer is Subhash Chandra Garg Committee in 2019. यही 50 क्वेश्चन को आपण माने बारंबार प्रैक्टिस करंतु एवं मन रखिया पई चेष्टा करंतु जहाँकि आगामी एग्जाम गुड़ी करे आपण को सहायता प्रदान करथिबो। जदि आपण को वीडियोटी भल लागिथाय तबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिबा पई भूलिबा नै एवं वीडियोटी जदि भल लागते आपण माने आपण संग माननकु जे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर होचंती तांको सजेस्ट करि परिबे। धन्यवाद।